Hello everyone, hope you all are good. In my last lecture, we discussed about the solenoid. Today we discuss the topic electromagnet. Write down electromagnet. First of all, बच्चे, it is clear from the word. It is made up of two words. One is electro and second one is magnet. Electro refers to the electrons or charge. Electrons or charge means to say that when electric current is passed through the conductor, it behaves like a magnet, and that one is called electromagnet. In simple words, this one is a definition. When you pass the current, it behaves like a magnet. That magnet is called electromagnet. Write down बच्चे. Simple definition है आपका. Write down. Electromagnet is simply a bar of soft iron. It is a bar of soft iron placed inside a solenoid carrying current. Placed inside a solenoid carrying current. Right done, बच्चे. Now here, this one is carrying current. You well known about the term solenoid. When you pass the current, or you can write down, when you pass the current, the bar of soft iron, the bar of soft iron placed inside a solenoid behaves like a magnet. Behaves like a magnet. On the other hand, when you switch off the current, when you switch off the current, magnetism disappears. Magnetism disappears. Means to say that जब तक करंट पास होता है तब तक तो वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट है और बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट. बट जब करंट की सप्लाई ऑफ हो गई, मीन्स टू से दैट स्विच ऑफ कर दिया, देन इट इज नो मोर मैग्नेट. सो इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट. फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ temporary magnet. In other words, you can write down not permanent.
magnet. Note down the check. Okay. Now electromagnet is used in electric bells, telephones and electric motors. Write down, it is used in electric bells, motors and telephones. Note down बच्चे. Okay. Next one is difference between the bar magnet and electromagnet. Difference between bar magnet and electromagnet. So you are well known about the terms bar magnet as well as electromagnet. So here is the difference. Just draw a straight line. Here bar magnet and this one is electromagnet. Electromagnet. Note down the check. First point, it is a temporary magnet. It is a permanent magnet. It is a permanent magnet. Means to say that इसमें आपका मैग्नेटिज्म डिसअपियर नहीं होता. On the other hand, this one is a temporary magnet. It is a temporary magnet. Note down बच्चे. It produces bar magnet. It produces weak forces of attraction. Weak forces of attraction. On the other hand, here just opposite, it produces strong magnetic field or magnetic force. It produces strong magnetic force. Third point is strength of
permanent magnet or bar magnet cannot be changed, cannot be changed. But here in case of electromagnet, that one is a temporary. Strength of electromagnet can be changed. Strength of electromagnet can be changed. And how? ये कैसे चेंज हो सकता है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट. करंट की वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो. नंबर ऑफ टर्न्स, ये फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. नंबर ऑफ टर्न्स and this one is also depend on the nature of material. You are well known about these factors. Note down बच्चे. Last point is the polarity or north-south polarity. North-south polarity of bar magnet cannot be changed, cannot be changed. And in case of electromagnet, the north-south polarity, the north-south polarity changes or can change by changing the direction of current, can change by changing the direction of current, direction of current. Now last point का मीनिंग क्या है बेटा? इस केस में पोलैरिटी वर्ड है, पोलैरिटी रिलेटेड टू द नॉर्थ साउथ पोल, पोलैरिटी वर्ड इज रिलेटेड विद द पोल्स. इस केस में नॉर्थ साउथ पोल चेंज नहीं कर सकते, बट इन दिस केस इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में आप नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. नोट डाउन बच्चे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Now force on a current carrying conductor कहां पे रखा है बेटा? दैट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड.
Note down. Now, when current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. It experiences a force. करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. And if the direction of the field and current, direction of field and current, direction of field and current are perpendicular, this one is a symbol of perpendicular. You can write down the word also, perpendicular. Now बच्चे क्या है, direction of field and current both are perpendicular to each other, then force क्या हो जाएगी आपकी, write down, force acting on the conductor, then force acting on the conductor will be perpendicular to both. Means to say that field and current अगर ये आपस में perpendicular हैं, तो जो force apply होगा that one is also perpendicular to both these, field and current, and is given by Fleming's left hand rule. And this is the basis of electric motor. This is the basis of electric motor. Means to say that इलेक्ट्रिक मोटर आपका इस बेस पे काम करता है. नोट डाउन बच्चे. Okay. एंड इलेक्ट्रिक मोटर है क्या बेटा आपका, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर
is a device that converts electric energy into mechanical energy. Note down bachche. Okay. Next topic is direction of force on a current carrying conductor. Direction of force on a current carrying conductor. Or Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. In this case बच्चे, if you stretch your fingers of your left hand, fingers आपकी कौन कौन सी हैं? That one is middle finger, forefinger and thumb. If you stretch these three fingers, just look at this. Then finger आपकी कौन कौन सी हैं? If you stretch forefinger, middle finger and thumb of your left hand mutually perpendicular to each other. Just look at my hand. These are the three fingers which are mutually perpendicular or stretch perpendicular to each other. Write down, if forefinger, middle finger and thumb of your left hand are stretched perpendicular to each other. Are stretched perpendicular to each other. Then forefinger आपका बच्चे gives the direction of magnetic field, and if forefingers points towards the direction of magnetic field, point towards the direction of magnetic field. And middle finger, that is points along the direction of current. Middle finger points along the direction of current. Direction of current
देन थंब, देन थंब। थंब क्या करेगा? देन थंब, राइट डाउन, will indicate the direction of force acting on the conductor. Then thumb gives the direction of force, gives the direction of force acting on the conductor. नोट डाउन बच्चे। Here I just specify you, these are the three fingers. This one is your middle, this one is your forefinger, and this one is your thumb. Forefinger or middle finger? Middle finger gives the direction of current, forefinger gives the direction of field, and thumb gives the direction of force acting on the conductor. Note down better. Okay, fine. नेक्स्ट टॉपिक बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, बट उससे पहले रूल्स आपके कहां कहां अप्लाई हो रहे हैं, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन है। जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर आपका और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, when you hold straight current carrying conductor in your right hand, in your राइट हैंड, यहां पे आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सेकंड, नोट डाउन, जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, यहां पे आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड जब आपको बच्चे डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ विच करंट? इंड्यूस्ड करंट। देन आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल। ये बेटा आपका था कि कौन सा रूल कहां पे आपको अप्लाई करना है। जस्ट नोट डाउन। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, देन आप रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, देन यू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जब आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, देन यू अप्लाई द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड rule. We discuss it in the next lecture, but here a term is used, that one is induced current. So question is that what is induced current? What is induced current? You can answer me with your comments, or you can also direct WhatsApp me on my number. We discuss it in the next lecture. You just go through this topic, and if you like my lecture, then please support me and subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day.